सची सुताष्टकम भाव और प्रेम से गाते हुए हम सब सची सुता अष्टकम and proceed further to the yatra. राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, श्री गौर मंडल परिक्रमा यात्रा की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी Hare Krishna, I welcome you all, the devotees who have gathered here, especially the senior devotees who have decorated this assembly, the senior devotees of Shree International Society of Krishna Consciousness, Iskcon, and I would love to welcome you all who have gathered in huge numbers from all the parts of this world through the medium of YouTube, Facebook, etc., who have joined this yatra. And the organizers of this second day of this Katha, because of whom we are able to perform this Katha and see. So the Bharadwaj Parivar, who recently did a Bhagvatam Katha, Rajesh ji, Suman ji, Navya, and his brother Sanjay ji, Naresh ji, and who is always near to me, so Kusimika Mataji, she has a record who always join. She always logins among the first. So Kusimika Mataji, I thank you. And we especially would love to pray that their daughter, who is in Dubai, it's her birthday today. So Tipu Chandji is a very serious devotee and he always listens to the Bhagvatam Katha. And it's his daughter's birthday. So we all Hare Krishna, chant holy Mahamantra. So I welcome you all on this Gaur Parikrama, second day of this Katha, and our humble obeisances at your lotus feet. Radhe Shyam. आप जिसका दर्शन कर रहे हैं यह है चैतन्य मठ। हमारा अंतिम पड़ाव था कल अद्वैत आचार्य भवन और गदाधर भवन, और गदाधर भवन से चलकर हम सब चैतन्य from Gadadhar Bhavan
we have walked towards Chaitanya Mat, and we are seeing all the images through the medium of Govind TV. So this Chaitanya Mat is that place that during the times of Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chandrasekhar Acharya's home was here. मौसा लगते हैं। मौसा जी जानते हैं, हमारी माता जी के बहन के पति। He is the maternal uncle of Chaitanya Mahaprabhu, that is Mausa ji. So Sri Chandrasekhar ji is Mausa or maternal uncle of Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu lost his father at a very young age. So Jagannath Mishra, his father, when he left for the eternal abode of the Lord, his maternal uncle used to take care of Chaitanya Mahaprabhu, and he took all the responsibilities of Chaitanya Mahaprabhu. So where Chaitanya, so the place where his maternal uncle used to stay is now the temple or नित्य नवीन कीर्तन करते थे, Matha विशेष करके of Chaitanya Mahaprabhu. चंद्रशेखर आचार्य के घर पर श्री चैतन्य महाप्रभु नाट्य लीला, Especially नाटक जानते ना, ड्रामा, Chaitanya Mahaprabhu used to perform drama here. So drama doesn't look, is not an appropriate word, but it is actually called a pastime, which is a better word here. So he used to perform his pastimes of proclivities, and he used to perform or act as Purinmashi, and Advaita Acharya used to become Shivji, and Gadadhar Pandit used to become the goddess of fortune, and everybody used to play their part perfectly. And the darshan that we are seeing now is the Chaitanya Mat, which is the home of Chandrasekhar Acharya, who was maternal uncle of Chaitanya Mahaprabhu. So nowadays the internal नाट्य लीला ड्रामा करते हैं अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, thought or mellow cannot be perceived, but so people try to get the praises of others. जैसे हम चैंटिंग करते हैं, जैसे हम कथा सुनते हैं, दर्शन करते हैं, यात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार ड्रामा As we chant, similarly acting the play or part is also a limb of bhakti, and the biggest example is the exalted devotees of the Lord, the eternal associates, the gopis of Raja. So they all started acting, some as Krishna, and वह ड्रामा व लीला होती थी। तो ये स्थान they used to perform his pastime in remembering the Lord himself. So this place is in the Antar Dweep, and it is next to Gadadhar Pandit's temple. In 1818, so Krishna Bhakti have been performed बहुत सुंदर भाव प्रदान किया, लेकिन since centuries. किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में कृष्ण भक्ति नहीं हो रही थी। आजकल कोई चोर चोरी भी करता है तो कितना ऑर्गेनाइज होता है, But the bhakti or pure devotional service towards the Lord was not being performed in an organized manner. So even if a thief wants to steal or और प्रथम कार्य ये किसी ने किया हमारी इस ब्रह्म मध्य गौड़ीय धारा में, तो वो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर।
भक्तिनु ठाकुर के पुत्र श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने भक्ति को एक ऑर्गेनाइज वे में प्रस्तुत किया और इसलिए उनको मंदिर बनाने की आवश्यकता पड़ी, जिनको उन्होंने मठ नाम दिया, गौड़ीय मठ। तो सन 1918 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने इसी ईशान ठाकुर चंद्रशेखर आचार्य के घर पर उन्होंने प्रथम गौड़ीय मठ की स्थापना की और फिर तो आगे चलकर उन्होंने कुल 64 गौड़ीय मठ बनाए, लेकिन ये प्रथम गौड़ीय मठ है और इस स्थान को उन्होंने नाम दिया व्रजपट्टन। So this place was named as Vrajpattan, where Vrindavan itself manifested. So this is Vrajpattan that you see on your screen. And this is by the mercy of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. This was the first Gauriya Matha made by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So there are quite a few deities here. So my personal favorite in this temple is the darshan of, in all the four directions there is a throne or singhasana, and every Acharya of all the Vaishnava Sampradayas are sitting here, and this was the huge step taken by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So these are the four Acharyas of all the disciplic successions in Vaishnavas. Disciplic succession: Shri Madhavacharya, Shri Vishnu Swami, Shri Nimbakacharya, Shri Ramanujacharya. So if we want to understand, Chaitanya Mahaprabhu is great. Even when I'm speaking, I'm feeling ecstatic. Our Brahma Madhya Gauriya succession is the topmost. Why? Because in Padma Puran, Vyas Muni writes, to receive the pure devotional service toward the Lord himself created these four sampradayas or the disciplic successions. So for your information, you and me cannot create sampradayas. The Lord himself creates them. What we make is a small or shop to get donations. The sampradayas are always started by the Lord. Pradaya means to provide, and Samp means sanidhya or association of the Lord. The succession which provides us an opportunity to sit at the lap of the Lord, and this authorization is only for the Lord. So in this Kali Yuga, to provide transcendental knowledge, he created these sampradayas, and it is mentioned in Padma Puran. So the first sampradaya is Brahma Sampradaya, and how it started. Lord Shri Krishna himself gave knowledge to Brahmaji and told him to create the sampradaya. And I bless you that you can start your disciplic succession and make your disciples, and in such manner a disciplic succession chain should be created. So this sampradaya was Brahma Sampradaya. So sometimes people think that they are in confusion. They say that they think that I am from this particular sampradaya. So we should first check whether are we in the authorized sampradaya created by the Lord. So the first that was authorized by the Lord is Brahma Sampradaya by disciplic succession from Brahmaji, and the second is Rudra Sampradaya
So Lord Krishna himself gave knowledge to Lord Shiva, and this disciplic succession started. And then he gave the same knowledge to Lakshmi ji, and it created the Shree Sampradaya. And the fourth one was the knowledge he gave to the Sanat Kumaras, and from there this Shree Sampradaya started. Oh, कलयुग के मन और बुद्धि की उपज है, बाकी वैलिड संप्रदाय कोई नहीं. So all these four are the only authorized sampradayas, and others are not. So when we want to give our kids material knowledge, then also we go and check that whether these university or school is authorized by the government or not. So we should also check when we are visiting a temple that is this temple connected to any disciplic succession, because other connecting the disciplic succession, we cannot attach a relationship with the Lord. Without a valid disciplic succession, we won't be able to get the complete transcendental knowledge of the Lord. And without disciplic succession, we will not get the mercy from the source. So as we heard yesterday that the son gets all the wealth of the father from inheritance, and if we attach ourselves in a disciplic succession, then automatically the mellows of the acharyas, just by attaching with them, we get the mercy and inheritance. So to attach in the disciplic succession is very necessary. But which is the valid sampradaya? It is very important to understand. So these four disciplic successions are there. So who are the acharyas in Kali Yuga? So these disciplic successions have started from the starting of the material existence. So in Kali Yuga, the acharya for Brahma Sampradaya was Sri Madhvacharya. Sri Madhavacharya. And for Rudra Sampradaya, the acharya was Sri Vishnu Swami. And Sri Sampradaya acharya was Sri Ramanujacharya. And Kumar Sampradaya, the acharya is Nimbikacharya. The Kumara Sampradaya is the Sampradaya started by the Kumaras, the Sanat Kumaras, under the Lord Shri Krishna. So these are the founders of the four disciplic succession, and these all were situated by Bhaktisiddhanta Thakur in this temple. So for our information, which disciplic succession we belong, so we are in the Brahma to Madhavacharya disciplic succession. This proceeded further. And when Lord Shri Krishna manifested as Srimati Radharani mellows as a devotee of the Lord, he was in no need to get entangled in all these disciplic successions, etc. But I am a devotee in eyes of others, so I should also connect to one disciplic succession. And as a devotee, Chaitanya Mahaprabhu, he attached himself to Brahma Sampradaya. And what was the revolution that he created? So this was Brahma Madhva Sampradaya, and Lord Chaitanya Mahaprabhu entered and took initiation in this succession. And Lord himself, Chaitanya Mahaprabhu, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya started. So how this Gaudiya word came into existence, I want to show
with this image. So although he is in Brahma Madhya Sampradaya, and but he revolutionized one thing. According to the situation, time, etc., he realized that this sampradaya or disciplic succession is progressing and it will progress further. And we are seeing that. So Sri Sampradaya is a valid disciplic succession. The preaching is very limited in parts of India. In Kumar Sampradaya from Nimbakacharya is almost non-existent. And the third Rudra Sampradaya. So Vallabhacharya, the Pushti Sampradaya, they are all in Rudra Sampradaya or disciplic succession. So there are people, they do pro devotional service towards the Lord, but they don't have the mood of preaching or broadcasting. So the only who are in their family are attached, but they don't provide bhakti or devotional service to others. So the expansion or preaching is being done. Lord himself saw that this will happen only in Brahma Sampradaya, and he attached himself to the Brahma Sampradaya. So, he wanted to strengthen this sampradaya or disciplic succession. So what Chaitanya Mahaprabhu did do Prabhu do? So the Vishnu Swami the Kumar Sampradaya of Nimbakacharya and Sri Ramanujacharya's Sri. So every disciplic succession has their own fundamental principles. So Chaitanya Mahaprabhu took two principles of each the disciplic succession and he started the Gaudiya Sampradaya. He took the conclusion of all the three others as well, and this was created by Lord himself. And what did Mahaprabhu do? He took two principles from all the four disciplic successions. And if you are in Iskcon or Gaudiya, then you are automatically following all of these. That is why I am trying to have darshan of these for all of us. So what are the principles that Chaitanya Mahaprabhu took from each disciplic succession? So the first and foremost is Madhavacharya, disciplic succession. And the first principle was to prove Advait Shastra wrong. The philosophy or the injunction which proved Advaitvad as wrong. Our Siddhant is Dvaita Advait, not Advait. So this is a philosophical point. If we understand that much is also sufficient. So Mahaprabhu took this principle from the Brahma or Madhva Sampradaya. And the second principle that he took is the process of performing the veneration or ritualistic veneration of the Lord. So that is Archa Vigraha. So earlier people used to perform veneration of the deities, but it was not that serious and ritualistic. That and the deity is eternal. So he took two principles from Shree Sampradaya. He was a staunch devotee of the Lord.
that is Kevala or pure माने bhakti माने of the Lord, means हमारे मित्र सखा, हमारे पड़ोसी नेबर बहुत हो सकते हैं, लेकिन we बाप can एक have ही होता है। very we can have जैसे multiple अनन्य friends, neighbors, etc. But हम the आदर Father सबको is only करेंगे, one. We respect हम आदर everyone. सबको करेंगे, सबको We प्रणाम should respect करेंगे, सबको everyone. We वंदन should bow down करेंगे, at everybody's feet. लेकिन प्रेम तो But केवल एक we भगवान will कृष्ण love से करेंगे, only रामानुजाचार्य से। Lord Shri Krishna. जैसे This is the प्रहलाद principle of Ramanujacharya. प्रभु As अपने सास की सेवा करते there हैं, is a ससुर की सेवा करती daughter-in-law है, in the अपनी जेठ home, ननद सबको she आदर देती है, सबको serves प्रणाम everyone करती है, and लेकिन respects प्रेम everyone. तो अपने But पति से ही love करती है ना। she only does उसी प्रकार to her रामानुजाचार्य से ये husband. सिद्धांत लिया, So अनन्य this is the भक्ति। principle that of Ananya Bhakti और that he दूसरा took सिद्धांत from रामानुजाचार्य से लिया, Ramanujacharya. And the भक्तों की second सेवा। principle is ये बार बार हैमरिंग किया जाता है ना कथाओं में, ये हमारी गौड़ीय फिलोसफी serving में, the कि भगवान से भी devotees. उत्तम है So भगवान के भक्तों this की is सेवा। what is hammered in ये our सिद्धांत philosophy, that रामानुजाचार्य के even द्वारा serving उनसे the जब ये devotees भक्ति is योगा far better प्रारंभ than किया, even तो serving the एक Lord. कथा में उसे So स्थापित this is the किया। principle which was सो established अनन्य भक्ति by Chaitanya और भक्ति Mahaprabhu की सेवा from रामानुज the संप्रदाय। Kumar Sampradaya. फिर Oh, Shri विष्णु Sampradaya, स्वामी sorry. रुद्र संप्रदाय, विष्णु So, स्वामी से दो सिद्धांत so from लिए, Vishnu Swami, he took two तदीय principles. सर्वस्व भाव, फिलोसॉफी Tadiya में Sarvasva Bhav, तदीय it is a सर्वस्व भाव, philosophical इसका point. अर्थ होता है It means कि इस जानकारी का भाव कि अपने भक्तों के लिए भगवान ही सब कुछ है, that for the devotee of ऐसी the जानकारी Lord is the या only ऐसा thing, भाव रखना and that mellow कि भक्त के or लिए feeling भगवान ही सब कुछ है। that the Lord is everything for a devotee. मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर, हमारे लिए नंद किशोर So for ही us, सब कुछ है, Lord ऐसा Nanda भाव Kishore रखना। is विष्णु everything. स्वामी This से is the और विष्णु स्वामी mellow रुद्र of संप्रदाय से Vishnu क्या लिया, Swami or Rudra Sampradaya. राजमार्ग भक्ति का स्वीकार, And they मतलब took दिव्य भाव से the ओतप्रोत होकर भगवान की आराधना pure करना, devotional service भगवान towards से the प्रेम Lord करना, ये with सिद्धांत and loving चैतन्य महाप्रभु unconditionally. ने विष्णु This is स्वामी the से ग्रहण principle किया that he took from कि Vishnu दिव्य Swami. भावों से ओतप्रोत होकर भगवान की So आराधना, this divine और तत्पश्चात love towards the Lord. निम्बकाचार्य से And from चैतन्य Nimbakacharya, महाप्रभु ने दो Chaitanya सिद्धांत लिए Mahaprabhu कि took two principles. राधा First, रानी का अद्भुत व अलग आश्रय, निम्बार्क the संप्रदाय में राधा रानी की बड़ी महिमा है। in Nimbark राधा disciplic सर्वेश्वरी, succession, अगर आप देखते Radha हैं Rani निम्बार्काचार्य की जो परंपरा है उसमें is कई नाम होते हैं, तो very राधा much रानी का glorious. अद्भुत So आश्रय her निम्बाकाचार्य से ये transcendental सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण shelter किया। was taken और from दूसरा the गोपी भाव का Nimbakacharyas, स्वीकार श्री and चैतन्य to महाप्रभु ने accept the निम्बाकाचार्य से ग्रहण Gopi किया। mellows also he तो took मध्व from the रामानुज Nimbakacharya विष्णु स्वामी Sampradaya. और निम्बाकाचार्य, इन चारों से दो दो सिद्धांत ग्रहण करके So from श्री all of चैतन्य these, महाप्रभु ने Chaitanya Mahaprabhu took two गौड़ीय principles each, संप्रदाय की and स्थापना he की, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। established Brahma तो Madhya हमें ज्ञान Gaudiya करना चाहिए Sampradaya or कि disciplic हम succession. यदि गौड़ीय संप्रदाय So में we हैं should और इस संप्रदाय understand में that भजन भक्ति when करते we हैं, are in तो this इन चारों आचार्यों के succession, सिद्धांत पर then हम we वर्तन are करेंगे, following the हमारा जीवन principles बन of रहा है all the जिसको श्री others चैतन्य as महाप्रभु ने well, प्रतिपादित किया है। and which was established by तो the Lord भक्ति सिद्धांत Chaitanya Mahaprabhu सरस्वती himself. महाराज ने प्रथम मंदिर की स्थापना की और उस So मंदिर में उस भव्य Bhaktisiddhanta मंदिर में Saraswati इन चारों made this आचार्यों first को स्थापित temple, रखा and he established these four acharyas और in फिर the इस मंदिर temple. में And in this भक्ति सिद्धांत temple, सरस्वती महाराज ने Bhaktisiddhanta गोवर्धन Saraswati का निर्माण किया, made राधा कुंड श्याम Govardhan, कुंड का निर्माण and किया, Radha Kund and Shyam Kund were क्योंकि also क्योंकि वे इस मंदिर manifested की स्थापना करके ऑर्गेनाइज वे में because he भक्ति का wanted प्रचार to प्रसार शुरू किए। make the जब preaching कार्तिक in a महीना more आया organized manner. तो भक्त When the कहने लगे Kartik कि अब हम month प्रचार approached, प्रसार छोड़ेंगे, हम they said वृंदावन that जाएंगे। we will तो leave भक्ति सिद्धांत महाराज preaching ने ये everything सिद्धांत कहा कि and यदि आप कृष्ण we भक्ति will का go to प्रचार Vrindavan. कर रहे हो He said, तो the हम जहाँ Bhaktisiddhanta हो Saraswati वही स्थान gave आपके the लिए principle वरदान that है। if you are preaching about the Lord, उन्होंने then the place भक्ति where you के reside is अपने इस itself Vrindavan. मठ में
So in his mud, this Chaitanya mud, he created Govardhan. He said the लेकिन यहाँ जो glories गोवर्धन of है the ना, place अपना is मन इस गोवर्धन में लगे और इसकी there, परिक्रमा but करोगे तो ब्रज में जो गोवर्धन है उसी if you परिक्रमा circumambulate को this यहाँ प्राप्त करोगे। Govardhan, then you will get the मायापुर benefit of इस बात पर circumambulating उन्होंने the राधा कुंड और Govardhana श्याम of कुंड का Vrindavan. निर्माण किया। And he बोले created यहाँ यदि आप Shyam स्नान Kund and Radha करोगे तो Kund. राधा कुंड श्याम कुंड का फल प्राप्त होता है। And he said that if you dip here, तो then इस you will प्रकार get the से benefit भक्ति सिद्धांत of सरस्वती dipping महाराज in Shyam Kund and Radha Kund in Vrindavan. So thus कहते this हैं temple was भक्ति created. सिद्धांत महाराज It is said that भक्त शिष्यों को Bhaktisiddhanta प्रचार के Maharaj लिए भेजते थे used to send और his प्राय भक्ति disciples सिद्धांत for महाराज के कुछ preaching, शिष्य गृहस्थ थे and और वे जब some of प्रचार his करते थे तो ब्राह्मण आदि लोग उनका विरोध करते थे। बोले disciples गृहस्थ were काम धंधा करते हैं householders. और So रात को they प्रचार करने निकलते हैं। were प्रचार करने criticized का by the अधिकार Brahmanas. They said that ब्राह्मणों का है, विरक्त it is a सन्यासियों का है। responsibility of the sages and saints तब जब and भक्त गृहस्थ Brahmanas, होने not लगे of an householder. तब So the भक्ति सिद्धांत महाराज अपने भक्तों को उत्साह so देने the के लिए क्या disciples किए? जो जन्म से ब्रह्मचारी थे started becoming अखंड bewildered. ब्रह्मचर्य व्रत का धारण भगवा So पहनते थे। Bhakti लेकिन जब Siddhant, दुनिया who के लोग used to कहने wear लगे saffron कि as गृहस्थ he was a भक्ति का saint, प्रचार करते और and गृहस्थ when he कोई realized प्रचार that नहीं है people were तो criticizing his फिर हम लोग भी disciples, कहते हैं that हमने तो you're बहुत an देखा है householder, बहुत are सुंदर you गाते doing? हैं इसी बातों को। So even I have heard this बोले तुम criticism गृहस्थ a हो lot, तुम कथा that नहीं you're an कर सकते householder, कथा you केवल should not विरक्त perform कर सकते katha. हैं Katha कथा should be करने done वाला by एकलो a बुंडर person होना चाहिए। तो હું એને ગુજરાતીમાં કહું who is તારા a વાળા stranger. વહી ક્યાં કાઢવા ગયા હતા હા? તારા નથી ઉગતા એમાં અમે શું કરીએ हैं? लेकिन लोगों का कुछ बस वो जो जो अपना जो है वही दूसरों पर थोपना चाहते हैं। फिर हम लोग People want to force their opinion on others. जो मूल वक्ता So, है so the जिनके fundamental, क्या वो गृहस्थ नहीं थे? the भागवत बोलने fundamental वाले सूत गोस्वामी क्या वो गृहस्थ नहीं थे? वो speaker, तो गृहस्थ that थे is Vedvyas लेकिन or फिर भी Sud मेरे Goswami, कहने they का all तात्पर्य were है householders. थोड़ा But ज्यादा चलता people है who are in punishment, and they have. भक्ति सिद्धांत महाराज के So शिष्य जब Bhakti नर्वस Siddhanta, होने लगे तो भक्ति सिद्धांत when they महाराज ने became क्या किया? nervous, बोले चिंता करने so की what जरूरत did नहीं है। Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur भक्ति did सिद्धांत महाराज ने do? अपने शिष्यों को बुलाया और He कहा called his एक disciple सूट and बनाओ, said that पैंट make शर्ट a टाई ब्लेजर suit for me. और एक टोपी भी उस समय टोपी का जमाना था। And it बोले was the टोपी भी time of लाओ छड़ी hat, लेकर आओ and he ordered them और to सबसे get महंगी कार hat कौन and सी a मिलती? stick, बोले रोल्स and रॉयस। which is बोले वो the कार लेकर आओ। भक्ति most सिद्धांत महाराज expensive car, ने ठीक bring ठाक Rolls अपना Royce पैंट car. शर्ट पहन So करके थ्री he पीस सूट। आज भी आप came जाओगे in ये three-piece गोविंद टीवी suit. दर्शन कराएंगे तो अच्छा You है। will see in Govind TV. आज भी वो शूट बूट टाई वो सब So गौड़िया still, मठ के those दर्शन the में है dress are जो still भक्ति in सिद्धांत महाराज पहन कर the निकले थे Chaitanya प्रचार Mutt करने के लिए। still today, तो पैंट with शर्ट पहन which कर गए in which he प्रचार preached करने the world. और जो बड़े बड़े कह रहे थे ना ब्राह्मण सन्यासी आदि तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे ये लो पैंट शर्ट बोलो So he ऐसी चीज came क्या in है pen जो shirt. मेरे अंदर नहीं है जो मैं He प्रीचिंग said नहीं that कर सकता। what is the shortcoming that इस I प्रकार cannot से preach? भक्ति So सिद्धांत in this महाराज ने manner, कहा Bhakti Siddhanta साधु बनने के Thakur लिए said that भक्त to बनने के become लिए a कपड़े saint नहीं or a नहीं devotee, है। the clothes हाँ कपड़े or अच्छे outlook पहनो is not important, इतना ज्यादा रोल नहीं है। but it doesn't play भक्ति a सिद्धांत major कहते हैं role. साधु बनने के लिए But to become a साधु saint or a गुण नहीं devotee, होने चाहिए you should भक्त have the के गुण होने qualities चाहिए of a क्योंकि devotee. भक्ति का अर्थ है प्रेम और And प्रेम किसी bhakti भी अवस्था में denotes किया जा love, सकता है and प्रेम it can किसी be भी done in वस्त्रों में किया any जा सकता है stage प्रेम or कोई भी कर सकता है प्रेम के any लिए कोई type of बंधन नहीं हो clothes. सकता। There is no restriction भक्ति in love. सिद्धांत महाराज ने ये सिद्धांत स्थापित And this किया is what और कहा principle he कि हमारा showed मूल to आश्रय us. हमारे गुरु है। And he said that the जिसका fundamental आश्रय shelter लेकर for all of उनकी us आज्ञा should से be our हम bona fide जहाँ spiritual रहेंगे master. वही हमारे लिए ब्रज है। भक्ति By भक्ति our धाम spiritual माने क्या? master's guidance, जहाँ गुरु wherever हमें we सेवा stay देते हैं गुरु ने is जो हमें Braj सेवा दी है Vrindavan. गुरु So ने the हमारे service मनमाने ढंग that से नहीं is हमारी given मनमानी by बुद्धि our से नहीं Guru, not according to गुरुदेव ने our हमें own जो whims and सेवा दे fancies, रखी है but the वो सेवा service that has been यदि provided by हम our bona fide करते spiritual हैं master, तो वही स्थान then हमारे लिए if we ब्रज है do the same, वही then स्थान that हमारे place लिए सबसे for us उत्तम है। becomes ये Vraj, सिद्धांत and that is the भक्ति सिद्धांत topmost place महाराज for ने us. स्थापित किया। This is the principle Bhakti तो Siddhant ऐसे Maharaj भक्ति सिद्धांत महाराज established. ने यहाँ पर गोवर्धन का दर्शन है राधा कुंड
कुंड श्याम कुंड का भी दर्शन है। So here is Radha Kund, Shyam Kund, कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज and की there is समाधि है। a shrine of Gaur महाराज के गुरु हुए Kishore गौर Dadaji किशोरदास बाबा जी। ये Babaji. गिरधारी है So जिसका जिक्र Gandharvika Girdhari, which we तो mentioned a little before. किशोरदास बाबा जी महाराज की So समाधि Gaur का Kishore दर्शन है। Baba Maharaj भक्ति shrine सिद्धांत or is also here, का यहाँ पर निवास स्थान है। and it was the home of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. हमारे गोविंद टीवी पहुंच चुके हैं। आइए पहले So our Govind TV has reached, और उनका श्रवण करते हैं। and let's listen from them. আকর মঠার শ্রী চৈতন্য মঠ, শ্রী চৈতন্য মঠের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করছেন গান্ধার্বিকা গিরিধারী গৌর সুন্দর प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बंगला भाषा में बोल रहे हैं। साल में बंगाली सुन लीजिए। विग्रह प्रतिष्ठा करेंगे। महाराज हिंदी बोल सकते हैं। ये श्री चैतन्य मठ टोटल देखता है आपको ब्रज मंडल। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ये ब्रजपत्तन श्रीमान महाप्रभु ब्रज भावे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ब्रज भावे इधर नाटक करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का मासिर बाड़ी इधर है। महाप्रभु जे भाव ब्रज भाव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इधर से भाव उदय होगा। ऐसे के लिए इधर राधा कुंड और अभिन्न राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज महाराज जी रहता है। केली कदम तामाल बिक हो इधर रहता है। ये राधा कुंड में ओरिजिनल से बोझ भाव है, चैतन्य महाप्रभु का भाव है। ऐसे के लिए गांधार्विका गिरिधारी का दर्शन मिलेगा। 102 वर्षों ये मंदिर में श्री विग्रह प्रतिष्ठा है। टोटल आधार देखा है 4 आचार्य जी श्रीमान महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 4 आचार्यों का निम्बार्क विष्णु स्वामी रामानुज और मध्वाचार्य ये 4 प्रकोष्ठ में 4 विग्रह आचार्यों का विग्रह प्रतिष्ठा है। श्रीमान महाप्रभु एक एक आचार्य का बाद 2-2 मत लेगा। ऐसे के लिए श्रीमान महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेद तत्व इधर है। ये नाट्य मंदिर देखता है पीछे में। ये नाट्य मंदिर अविद्या हरण नाट्य मंदिर है। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इधर ये नाट्य मंदिर का समस्त भक्त में के बोलता है अविद्या हरण। अविद्या हल माया, अविद्या है माया, माया का हरण है। ऐसे के लिए ये नाट्य मंदिर का काम है। साधु श्री चैतन्य महाप्रभु इधर है, देखता है आपको चैतन्य देव। चैतन्य देव चैतन्य मठ के रहता है और गौड़ीय मठ तथा टोटल गौड़ीय मठ इस्कॉन है मठ में है। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का ठाकुर में शिष्य है A.C.Bhaktivedanta स्वामी महाराज प्रभुपाद है। इधर है सभी श्री चैतन्य मठ चैतन्य देव का सेवा के लिए है। चैतन्य मठ में प्रभुपाद बोलता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी चैतन्य में चैतन्य देव रहता है और समस्त गौड़ीय मठ भक्त रहता है। चैतन्य देव का भक्त रहता है और सबसे हृदय में समस्त भक्त में हृदय में चैतन्य देव रहता है और भक्तों में सेवा करता है। एक के लिए श्री चैतन्य मठ स्थापन करता है। जगत में चैतन्य वाणी प्रचार मूल केंद्र है। ऐसे के लिए यही चैतन्य मठ का सेवा, चैतन्य देव का सेवा, चैतन्य मठ मतवाद
अचिंत्य भेदाभेद तत्व पृथ्वी में, जगत में, ब्रह्मांड में प्रचार करता है और गोलोक वृंदावन स्थापन करता है। इस स्थान में अभिन्न वृंदावन है। ये वृंदावन दर्शन के लिए 84 करोड़ वृंदावन और इधर 16 करोड़ नवद्वीप धाम परिक्रमा और इधर राधा कुंड श्याम कुंड परिक्रमा यथार्थ फल, गोवर्धन परिक्रमा यथार्थ फल मिलेगा। वृंदावन से गोवर्धन परिक्रमा का जा मिलेगा, जो मिलेगा इधर मिलेगा आपको के लिए। इधर है यही श्री चैतन्य मठ। जय श्री चैतन्य मठ, जय श्री चैतन्य मठ। गांधार्विका गिरिधारी की, गांधार्विका गिरिधारी की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, जगत गुरु प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की नमस्कार। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बहुत सुंदर दर्शन। We saw the beautiful darshan of Chaitanya Mahamat. Maharaj Shree requested the beautiful pastime that how this is the entry point of Chaitanya Math and this is Gandharvika Giridhari ji, which he mentioned. Then all the acharyas of all the four sampradayas, Radha Kund, Shyam Kund, so these were established by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. वैसे देखा जाए ना तो ये गौर मंडल पूरे भारत के जितने भी तीर्थ है वो सब, if we see this Gaur Mandal is the package of all the holy places of the country. So if we just circumambulate this, then we will get the benefit of all circumambulating the all holy places of India or Bharat. So here is the Govardhan Darshan. This is a beautiful Govardhan circumambulation. It is very good for us. We'll do in Braj. We circumambulate, then it is 22 kilometers and 6 hours. But here it is done in 6 minutes. And the result or benefit is the same. Then this is the shrine or samadhi of Shri Gaur Kishore Das Babaji. And he is the bona fide spiritual master of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur who established this matha. So what does it mean? So Srila Prabhupada's bona fide spiritual master is Bhakti Siddhanta Saraswati and Gaur Kishore Babaji is disciple, is the guru of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So here what we should try to understand is that the Bhakti Vinod's son was Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And he told his father that I want pure devotional service of the Lord, so please initiate me. But this sampradaya is magnificent. Although he could have initiated his own son because he was initiating so many people, but he could have done it for his own son as well. But he thought that if I give initiation to my own son, then it will become a disciplic succession in the family. So automatically the guru son will become guru. It is not necessary that a father is doing bhakti or pure devotional service, then the son will also do the same.
We cannot tie them. We can give our kids training and we can try to give them values, but we cannot force them to perform pure devotional service towards the Lord. And in Gujarati, it is mentioned or it is said that there is always darkness under the lamp. The history says that it is not necessary that a doctor's son will become doctor. It's not necessary. There is the chances which are more because the father is experienced at what they should study. But it is not necessary the guru's son will become a guru as well. So people ask me that you do katha, so your son will also do. So yeah, we have the desire that he will do preaching or perform pure devotional service towards the Lord, but we cannot force it on them. We don't know what are their sukriti, what are their good deeds. Who knows that he might not do it at all, or we might do it better than us as well. We can just give them the value system. We can just try to inculcate value system in them. So in many disciplic succession, there is that the guru's son will become the guru, and it started becoming as an inheritance, and because of that the mellows and the principles all deteriorated over the time. So Bhaktisiddhanta asked his father that give me initiation. He said that if I can give it, but the message will be wrong, so what shall we do? He said, I have a disciple who is Gaurkishore Babaji. You go to him and take initiation from him. Then this disciplic succession will remain strong. So he went to Gaurkishore Babaji to take initiation. And he always used to do Sankirtana. And people used to disturb him a lot. So he used to sit in the toilet and he used to close the door and chant the holy names. People are disturbing, so I will chant here so that nobody disturbs me. And it is said in the Shastras that now today that we are chanting the holy names without any distress or disturbance. The reason behind is Gaur Kishore Babaji. It is his blessings and austerity that we are able to chant the holy names without distress and disturbance. So Bhaktisiddhanta Thakur went to get initiation from Gaurkishore Babaji and he refused. He said, I am being refused by my father and by you as well. So how can I perform pure devotional service to the Lord? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur tried to convince him and serve him, and finally Gaurkishore Babaji took him as his disciple. And such Gaurkishore Babaji's shrine is here. And here is also the home of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, where he used to stay. And from here he established the Gaudiya Math. So from here he planned all his preaching activities, and after that this is the shrine of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur as well. So there are two shrines here, Bhaktisiddhanta and Gaurkishore Babaji's samadhis or shrines.
आइए अब हम So, चैतन्य या गौड़ीय मठ से बाहर निकलते हैं so let's proceed और from वहाँ से Gaudiya बाहर Math निकलकर हम आगे की ओर and बढ़ते हैं। proceed further. इस्कॉन मंदिर से योग So पीठ from the की ओर Iskcon चलना है Temple, if we move towards Yogapeeth, और इस्कॉन से योग पीठ पहुंचने वाली जो सड़क है the road वहाँ that बीच में connects एक these two, अस्पताल है there मायापुर is a अस्पताल hospital, that is Mayapur और इस Hospital, अस्पताल के निकट एक नाला है। and नाला near to माने that हिंदी में नाला माने ब्रिज, स्मॉल ब्रिज, there छोटा is सा a ब्रिज small है। bridge, उस ब्रिज के ऊपर चलकर उसे पार करके एक कच्ची and गंदी crossing सड़क है that there वहां is पर a चलते हुए rough small road, कुछ ही मीटर की and if you दूरी पर walk एक there, स्थान है then there जिसे is बूढ़ा a शिव या वृद्ध Budha शिव Shiv घाट or के रूप में Vriddha माना Shiv जाता था। Ghat आजकल इतना is लोग आते considered, जाते नहीं was है, considered. लेकिन So स्थान now है people लोग don't इतना visit आते it जाते नहीं much. है। ऐसा कहते हैं कि इस It is क्षेत्र में said that स्वयंभू in this शिवलिंग प्रकट area, हुए। ये जो आप देख रहे these हैं कि इस shivlings क्षेत्र में ये स्वयंभू शिवलिंग प्रकट manifested हुए थे। itself श्री चैतन्य महाप्रभु के समय यहाँ पर during the times of 5 Chaitanya मंदिर हुआ Mahaprabhu. करते थे There were और 5 यहाँ पर temples ये here, शिवलिंग की स्थापना थी। and these shivlings were ये established there. स्थान अभी भी यहाँ पर है, लेकिन ये जो शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुए So these इसे shivlings यहाँ से that were उठाकर manifested, चैतन्य महाप्रभु के they, जन्म स्थान योग they पीठ were में स्थापित taken किया from गया। here and established at सो Yogapeeth. महाप्रभु के समय यहाँ इस वृद्ध शिव का मंदिर हुआ करता था, So there used to be this लेकिन अब Vriddha Shiva गंगा temple, बहुत but बढ़ now जाती है because और अनेकों बार बाढ़ आने there के is always कारण flooding from Ganga महाप्रभु Ji, के समय जो यहाँ that मंदिर is था why वो these तो ढक गया, shivlings were लुप्त हो गया। लेकिन शिव जी को यहाँ से उठाकर shifted महाप्रभु to के जन्म स्थान the पर birthplace स्थापित of कर दिया। Chaitanya Mahaprabhu. The तो इस temple वृद्ध शिव, ये दो शिव जी है, दो शिवलिंग है, एक है गोपेश्वर महादेव is no more. और एक So है this is the क्षेत्रपाल Gopeshwar बूढ़ा Mahadev शिव। and Vriddha Shiva गोपेश्वर or महादेव old Shiva. साधक भक्तों को शुद्ध So भक्ति देते हैं Gopeshwar Mahadev और gives ये वृद्ध pure शिव devotional service to मायापुर the को exalted रक्षा devotees, करते हैं। ये क्षेत्रपाल, and ये पूरे this मायापुर नवद्वीप Vriddha मंडल Shiv के protects क्षेत्रपाल the हैं। whole Mayapur or Navmandal इस Dham, स्थान पर जहाँ पर हम लोग Navdeep आए Dham. हैं, यहाँ पर So this योग place माया where we वास have come, करती है। here Yogmaya जिस योग माया resides, को यहाँ पर प्रोढ़ा माया कहते हैं। which is सो called योग here माया as Prodha प्रोढ़ा Maya, माया शक्ति यहाँ सदैव वास करती हैं। and she always resides here. अब यहाँ से आगे बढ़े So if we move further तो from यहाँ here, से लगभग 6 मीटर उत्तर की ओर हम आगे चलेंगे 6 meters ahead from तो here एक बहुत towards the सुंदर north, घाट है then there is a महाप्रभु beautiful घाट। ghat आज क्योंकि यहाँ पर कोई or स्नान नहीं हो wharf, रहा as nobody इसलिए takes a dip सूखा here. हुआ है। It is आप all वीडियो dried up. में भी आप देखोगे If you see कि in सब the सूखा video as है well, it क्योंकि is all लोगों की dried up यहाँ अवर जवर नहीं होती है। because अवर people जवर बात hardly होती है ना, visit here. तो यहाँ इतनी अवर जवर नहीं है, लेकिन ये This बहुत is सुंदर a घाट more है। secluded place, but it used to be a यहाँ ghat. पर स्वयं गंगा माता ने Here, तपस्या की थी। Ganga ji इस herself प्रकार has से है, performed austerity. The pastime is like that, गंगा और यमुना दोनों सखी है। that Ganga एक ji and बार Yamuna ji गंगा और both यमुना are दोनों ने, friends, and they both met. यमुना ने अपना सौभाग्य प्रस्तुत किया And और Yamuna, गंगा मैया ने अपना दुख प्रकट किया। गंगा माता कहती हैं कि Ganga यमुना ji तू कितनी said that भाग्यशाली है you are very कि fortunate, O तेरे Yamuna तट पर ji, कृष्ण का जन्म because हुआ। at your कृष्ण shore, तेरे तट पर लीला करते हैं, यमुना का पान करते हैं, यमुना में Krishna स्नान करते was हैं। born, he took मुझे dip, गंगा को he तेरे did दर्शन Ras करने का Leela मिला। and drank यमुना your water, जब but तुम I couldn't कृष्ण get से any मिलोगे fortune. तो मेरा Whenever ये you मैसेज meet देना, him, please और give my सौभाग्य message मुझे that भी प्राप्त please होना give चाहिए। some कुछ दिन के बाद यमुना blessings सखी भगवान to me कृष्ण as से well. मिली So और after a few यमुना का days, मैसेज दिया। कृष्ण ने कहा कोई बात Yamuna ji नहीं, gave this message तुम to अपनी Lord सखी Shri गंगा को Krishna. मेरा मैसेज दे देना So he said कि that मेरा you give my जन्म और message that मेरी लीला यमुना के तट पर हुई, my लेकिन birth आने and वाले my समय में मेरी pastimes कथा were जो है वो performed गंगा के तट पर होगी। in at Yamuna ji, गंगा जी but को जब ये मैसेज मिला प्रसन्न हो गई कि my फिर तो pastimes will सुखदेव be heard and गोस्वामी, said सुत गोस्वामी, at मैत्रेय your मुनि, shores. सनकादिक
then all these Bhagavatam Kathas were performed on the shores and of Bhagirathi Ganga, and it doesn't stop there. When Krishna Katha started happening in Gangaji shores, she became more, her desire to meet Lord Shri Krishna became more intense. She said that I am listening the pastimes, but I have not seen the Lord. So what shall I do? Then Ma Ganga came to this place and performed austerity here. And the goal was that Krishna in Kali Yuga, that is Chaitanya Mahaprabhu, will come and will take dip here, as he used to do in Yamuna cheese water. So the same things he should do here in my water. That is why Gangaji performed austerity here, and Mahaprabhu became ecstatic and satisfied. And in future, he performed all his proclivities here. So this is the place where she manifested. And if we proceed further from here, there is a Mahaprabhu Ghat. If we walk towards the north, 30 meters away, there is a beautiful place which is called Jagai Madai Ghat or wharf. So this Jagai Madai's pastime is mentioned in Chaitanya Charitamrut and Chaitanya Bhagvat in detail. In Navdvip, they got birth in a great Brahmana family, and they were the sons of Raghunath Rai. And although their names were Jagannath and Madhvanand, but they were entangled in such a bad association that although they were born in Brahmana families, they removed their genu and they stopped performing any rituals and started performing hypocrisy, although they were born in Brahmana. But their qualities of a Brahmana were devoid in them. Similarly, in nowadays also it happens that even nowadays a person from Brahmana family is eating meat, intoxicating. This is the responsibility of the Brahmanas to control themselves and to teach the society by their actions. If the brain of the society, that is the Brahmanas, will deteriorate, then what will happen to the society? So they were in wrong association and they were so much entangled in sin as a person gets entangled in a ditch, and they were performing so many sins, and they changed their name from Jagai and Madai. They used to intoxicate themselves and eat meat and disturb the devotees. And on other hand, Chaitanya Mahaprabhu's all associates were in Mayapur, and Mahaprabhu thought that for which what I have come, I am here to perform the Sankirtana. So he gathered all his associates and he created the mood of preaching. So that make two groups of two, three people and go in all directions and preach the holy names of the Lord. So the disciples said that you group us. So
Mahaprabhu divided them. So what happened? हरिदास ठाकुर और नित्यानंद Haridas प्रभु को एक Thakur साथ जोड़ दिया, and बोले तुम Nityanand दोनों अलग Prabhu were कथा करो, together. तुम अलग तुम He अलग। said that you will go अब हरिदास together. ठाकुर बिल्कुल ठंडे आदमी So Haridas और Thakur नित्यानंद प्रभु was very cool. अवधूत 200 की And स्पीड में, और Nityanand हरिदास जी Prabhu is an 120 की Avdut. स्पीड में अपनी साधना So भक्ति 3 लाख नाम जब से टाइम ही कहाँ मिले कि बेचारा प्रचार Haridas करे। Thakur used to chant 3 लेकिन lakh फिर भी names a day. महाप्रभु की How आज्ञा much है, time he'll get for हरिदास preaching? ठाकुर But शांति वाले, it नित्यानंद was प्रभु। महाप्रभु ने देखा भी order कि of ऋषि Chaitanya गुरु साथ में Mahaprabhu. होगा तो So, कंट्रोल में रहेंगे, तो एक ठंडे को एक गर्म को साथ में रख so दिया। he thought that it will be better to अब balance नित्यानंद प्रभु तो these बड़े two. चंचल अवधूत वेश, अवधूत की भी बड़ी परिभाषा फिर कभी सुनेंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु अब ऐसे स्थान पर प्रीचिंग करते हैं So Nityanand जहां Prabhu was प्रीचिंग preaching in करने such के a लिए कोई place नहीं where जाता, there nobody लोग उसे goes छोड़ to देते हैं। preach. नित्यानंद प्रभु सोचते हैं Nityanand कि Prabhu इजी thinks जगह पर, that आसान जगह पर तो सब लोग the जाते हैं, हम ऐसी place जगह which पर is easy to कृष्ण preach is भक्ति everybody कृष्ण goes नाम there. का प्रचार But the करेंगे place जहां where it कोई is नहीं जाता। challenging, then we should go there for तो preaching. तो जहां पर पापी तापी आदि लोग रहते थे, ऐसी ऐसी जगहों पर So जाकर he श्री started visiting नित्यानंद such प्रभु हरि places नाम कीर्तन where कराते all थे। the materialist people used एक to बात कहें, engage इस in दुनिया their में और activities. वर्तमान समय में No, आपको ज्ञान in ग्रहण this करना है world, ना, if you want तो to gather ज्ञानी के knowledge, पास जाना पड़ता है। you have to go to बच्चों को the स्कूल में पढ़ने person के who लिए has knowledge. घर से If the निकलना kids जाना want पड़ता to है, study, then they have to कॉलेज और go to the यूनिवर्सिटी school में or जाकर ज्ञान प्राप्त university होता है, to गुरुकुल में receive education. जाकर वहां रहकर ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन In धन्य है Gurukul, श्री you have to चैतन्य stay महाप्रभु, there and इसकी learn. करुणा तो देखो But महाप्रभु की, see the mercy of कि Chaitanya ज्ञान ग्रहण Mahaprabhu करने के लिए that अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर to जाना getting पड़ता है, education, you आज have to भी leave और everything पहले and भी। go. लेकिन महाप्रभु ने अपने भक्तों को क्या But पाने Mahaprabhu दिला दिया, महाप्रभु ने क्या चमत्कार कर दिया did कि such ये a कृष्ण भक्ति का ज्ञान, magic ये that भागवत का ज्ञान ग्रहण करने के लिए his जाने की disciples जरूरत नहीं, भक्तगण started हमारे पास आते हैं providing और हमारे this पास transcendental आकर knowledge to भक्ति का ज्ञान प्रदान the करते हैं। people. And ये the devotees महाप्रभु की come करुणा और कुछ नहीं है भक्तों। to जैसे the प्रहलाद people महाराज ने and कहा give them the holy names. This is कि the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. As इस Prahlad दुनिया में Maharaj ऐसे said बहुत that सारे लोग in होंगे, this world there are so साधु many संत भी, people in this world, even the जो sages अपनी or the भक्ति saints करेंगे, who जो will अपना just कल्याण करेंगे, अपना उद्धार think करेंगे, about their own लेकिन welfare अपने को फजीहत में or डालकर, do pure रिस्क में devotional डालकर service to the God. दूसरों का कल्याण But मेरे taking और risk नारद जैसे भक्त ही कर and सकते हैं। welfare of प्रहलाद others, ने क्या कहा, प्रभु only devotees of the मुझे तो Lord अपने like भेज Narada and दीजिए, me, Prahlad, लेकिन can मेरी do. ये जो He said जनता that है you इसे मुझे send भेज me दे to दीजिए। the lower planets. I चैतन्य don't mind, महाप्रभु का but ये please मूड है send my kingdom, कि लोगों के पास my जाकर residents or कृष्ण citizens भक्ति of का my ज्ञान kingdom दो, to the हरि नाम celestial महामंत्र planets. प्रदान करो। भक्तों ये जितने भी डिवोटी, मुझे तो So कॉन्फिडेंस है मेरी ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा पर, I have इस धारा confidence में in my प्रत्येक disciplic डिवोटी से succession लेकर बड़े वक्ता that तक, the ये smallest लोग and the ये लोग biggest इतना orators, बोलना अच्छा जानते हैं, they ये जितने भी speak हमारे so ब्रह्म मध्व well. गौड़ीय धारा या इस्कॉन के भक्त, ये जनता को जितना समय देते हैं ना, And the time they devote किसी to the ऑफिस और people, बिजनेस में देते if तो they give करोड़ों की to इमारत खड़ी कर देते, office or business, then they could have लेकिन been ये सब कुछ छोड़ multimillionaires. छाड़ कर But they leave केवल everything जनता behind का कल्याण करने के लिए just for the welfare भगवत of the ज्ञान, society भगवत भक्ति to का provide the प्रचार करते हैं। क्यों? transcendental knowledge to पागल all. नहीं हो गए Why? हैं, They have not श्री lost their चैतन्य mind, महाप्रभु की ये but आज्ञा है। this is the इस आज्ञा का order of कारण केवल Chaitanya महाप्रभु Mahaprabhu. को प्रसन्न करने के लिए And for his घर, happiness अपने and समाज, अपनी satisfaction, गृहस्थी, they leave अपना कुछ नहीं everything देखते, अपना सब behind कुछ फनाह करके and भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं। preach the holy names. और भगवत भक्ति का प्रचार करके आखिर क्या मिलता है? And what do they receive at the श्री end चैतन्य of महाप्रभु the की day? कृपा। They get स्थूल दृष्टि the से देखोगे mercy तो of लोगों की Chaitanya निंदा, Mahaprabhu. ईर्ष्या, If you स्वार्थ, see गारी in यही मिलेगा, gross terms, then लेकिन you will see भक्त that जानता है criticism कि is मैं यदि कृष्ण the भक्ति only का thing that we प्रचार get. कर रहा But a हूँ, devotee लोगों को knows कुछ that हरि नाम if दे रहा he हूँ, is कुछ preaching the संकीर्तन holy करा names रहा and हूँ, मेरे doing the महाप्रभु प्रसन्न Sankirtana, होंगे, then क्योंकि चैतन्य Mahaprabhu or महाप्रभु की Chaitanya आज्ञा Mahaprabhu है। will become अपने satisfied लिए तो as सब we लोग are करते following हैं, his request अपनी that भक्ति, everybody अपना does कल्याण तो सब their करते devotional हैं, service for लेकिन them or मेरी for their आज्ञा own है welfare. कि आप But दूसरों के
they do for the welfare of कई बार others. हम गौड़ीय भक्तों को लोग Sometimes गलत दृष्टि से देखते हैं, people see क्योंकि Gaudiya समाज स्वार्थी devotees है। आजकल with a बिना स्वार्थ के कौन किसकी different सेवा करता outlook. है? People think लेकिन महाप्रभु का the भेजा world हुआ is भक्त बिना materialist and स्वार्थ के selfish, जनता के but पास a जाता है, तो devotee जनता of के लोग Chaitanya Mahaprabhu लोगों goes की तरह समझ लेते selflessly, हैं कि कुछ स्वार्थ के कारण आया होगा, कुछ and दान they दक्षिणा think डोनेशन that के लिए आया he होगा। might have नहीं, come here to get some इस donation ब्रह्म or मध्य गौड़ीय charity. धारा में In चैतन्य this महाप्रभु Brahma की Madhya परंपरा Gauriya में Dhara जितने भी or भक्त disciplic हैं succession वो or अपने Chaitanya लिए नहीं Mahaprabhu's जीते, succession, they वो don't live for चैतन्य themselves. महाप्रभु की They प्रसन्नता के लिए, live समाज का for कल्याण के लिए ही जीते हैं। happiness of Lord Chaitanya Mahaprabhu ये and मेरा welfare of विश्वास, the ये society. मेरा अपना This is विश्वास है। my ये confidence ऊर्ध्वपुंड in this तिलक disciplic गले में succession. कंठी माला पहनकर जो व्यास मंच पर बैठा है, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो जो प्रीचिंग कर रहा है, Whoever is वो doing the अपना नहीं preaching कर रहा है, वो by अपना करना distributing चाहता ना तो बहुत books कुछ कर सकता था, or in the, they could लेकिन have वो done कर so रहा much है for their श्री own चैतन्य। welfare, but इसलिए if they are यदि doing आप it, they are मेरे doing for अपने हो the ना, तो happiness जो of Chaitanya दूसरों को Mahaprabhu. हरि And नाम if you देता are है, my, जो दूसरों को भक्ति सिखाता है, if you respect me, उसको then सदैव आदर you should कीजिएगा, always उनका respect सदैव a person रिस्पेक्ट who कीजिएगा, क्योंकि वो preaches बहुत बहुत others, सैक्रिफाइस करके, because वो they are बहुत कुछ sacrificing a त्याग lot करके समाज का कल्याण कर रहा है, for the welfare एकमात्र of this चैतन्य society, महाप्रभु की प्रसन्नता only और for जगत के one कल्याण के लिए। goal of making Chaitanya Mahaprabhu और इसीलिए satisfied तो and welfare 10 of the नाम अपराध society. में पहला नाम अपराध कौन सा That है? is मुझे why, बताइए। what is the offenses of व्यासदेव the holy पागल हो गए names? थे? The first one, व्यासदेव ने पहला नाम अपराध कौन सा रखा? what has उन Vyasdev mentioned as महान the first भागवतों की निंदा, Vyasdev? That जिन्होंने is अपना जीवन criticism of कृष्ण the प्रचार devotees के लिए who समर्पित are किया है। preaching the जो कृष्ण प्रचार करता है ना, names of the ये Lord. वाक दानम, ये वाणी का This दान जो है ना, वीर्य के दान के समान है। us इसमें ओज लगता है, इसमें तेज, इसमें प्रभाव this चाहिए। requires जब so बंदा much 24 घंटा स्मरण मंथन करता है, energy. तब 24 मिनट Then बोल सकता है। when a person मैं मेरी बात कर ही नहीं रहा हूँ, contemplates and मेरी studies, मूढ़मति देखिएगा, then मैं तो only he is दूसरों able के to पास से speak. ही कुछ बोलता हूँ, लेकिन I'm इस not talking about संप्रदाय में, myself, but in इस this ब्रह्म disciplic मध्य गौड़ीय succession, धारा में, in Brahma Madhya Gauriya छोटे से Dhara, लेकर बड़े तक जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, whoever is उसका सदैव preaching, आदर you कीजिएगा, should always क्योंकि वो respect बहुत them सैक्रिफाइस कर रहे हैं, because they're वो बहुत sacrificing a कुछ कर रहे lot हैं। and they're उनका giving जो so भी much मूड to है, the society, देखे भगवान देखे, whatever their mood लेकिन उनका may be, कार्य बहुत and उत्तम है। प्रहलाद महाराज ने it कहा कि should ऐसे be हजारों between them ऐसे and the भक्त Lord, हैं but जो अपनी ओर न देखकर समाज का still कल्याण के लिए we should जीते हैं। respect them because सो महाप्रभु they की ये don't मुहिम look at है, their welfare but the welfare of बोले अपनी घर others. So they are गृहस्थी मत doing a देखो, great job मेरी आज्ञा and they है, should be respected. प्रचार करो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भेजा So Chaitanya और Mahaprabhu नित्यानंद sent प्रभु them हरिदास ठाकुर के साथ for preaching. अब चले गए उस स्थान पर जहां पर जगाई और मधाई ये दोनों शराबी रहते थे। So he अब went लोग to the कहने place लगे कि where वहां मत Jagai and जाओ, वहां Medai मत जाओ, वहां पर वो used to शराबी रहते stay हैं, वो आपसे because हल्ला they were करेंगे। drunkards. And they were नित्यानंद told, प्रभु ने Nityanand कहा Prabhu कि was जब told that तुम्हें you should not चैतन्य go there महाप्रभु का because they आदेश are हो, drunkards and they मेरे will abuse you. मेरे ईश्वर कौन, करुणा का सागर, Nityanand और Prabhu said that करुणा का my सागर यदि master कृपा न करे is तो ocean हमारे of नाम पर mercy. लज्जा हो जाए, Then if कलंक we लग don't do जाए। mercy, then करुणा तो our उसी पर होनी name will चाहिए be ना, spoiled. दया उसी पर होनी चाहिए जो दीन है। So the mercy should be जगाई और done मधाई on the करते most और जगाई मधाई fallen दूर से person. शराब के नशे में चूर आ रहे थे। हरिदास So ठाकुर कहते भाई छोड़ो these ना, were यदि intoxicated, मारेंगे पीटेंगे and तो हमारी 3 Haridas करोड़ Thakur आदमी said that we कल should जो सुबह बैठकर करना वो अधूरा रह we जाएगा। should leave this place. अब नित्यानंद But प्रभु बोले, Nityanand हरिदास Prabhu ठाकुर was कहते हैं persistent. लिटरली जैसे तैसे हरिदास And ठाकुर somehow नित्यानंद प्रभु को लेकर घर पर वापस आए Haridas और Thakur चैतन्य took Nityanand महाप्रभु को Prabhu to हरिदास home ठाकुर प्रणाम करते हैं कि and मेरी टीम he जो है ना bowed down आपने गलत सिलेक्ट कर ली, मुझे at the किसी lotus और feet के of साथ Chaitanya मत Mahaprabhu and लगाओ, said मैं that you नित्यानंद के साथ please मत attach लगाओ। him to ये someone else. इनके अंदर यही मूड है कि जो पापी हैं, जो जहाँ परेशानी होती है वहीं पर प्रचार। Wherever there is disturbance, he wants to go there. तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को समझाया, Mahaprabhu लेकिन ये to तो जैसे Nityanand थे Prabhu, वैसे। but Nityanand ऐसा Prabhu कहते हैं was persistent. दूसरे दिन हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जब चले The next day, तो उसी गली when में they नित्यानंद started प्रभु
Nityanand Prabhu again went there और क्या कहते हैं उसके at the विषय same place. And what is mentioned about them here in front of your screen? अकरोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ा अकरोध परमानंद। हरिदास ठाकुर कहते हैं Haridas Thakur says, Nityanand Prabhu, yesterday he was abusing us. Don't you feel that? We should not, we should avoid such place. नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाए। अभिमान तो है नहीं, अभिमान होता So तो उस he doesn't have envy or pride because otherwise he would have avoided such place. इंग्लिश या हिंदी के वाक्य में नाउन होता है, वर्ब होता है, क्रियापद होता है, जगह मध्य का सेंटेंस बिना गाली के कंप्लीट नहीं होता था। ये उनका व्याकरण। So this Jagai and Madai would not use a single sentence without cursing others. द्वारे द्वारे गीया हरि नाम महामंत्र दिन बिलाइया। और इनके मन में भाव क्या था? But अधम the mellows in Nityanand Prabhu's heart that I should go to the most fallen because ordinary people will be taken care by others. ऐसे लोगों के द्वार पर जाना है और द्वार पर जाकर कहना Want है to go to the places or people who are the most fallen like Jagai and Madai हरि नाम का जाप। and give them the holy names of the Lord. And further it is said or recited here. यारे देखे तारे कहे दंते तृण धरी अमारे किनियालह भज गौर हरि। जो भी मार्ग में मिलता उनको कहता कि हरि बोल, Wherever he met, used to tell them to chant the holy names. तो कम से कम मेरे लिए तो बोल। And he said that if not for you, do it for my अगर कोई हरि बोल हरे कृष्ण satisfaction. मंत्र बोल देता तो क्या होता? And if somebody used to chant the holy name on his behest, then what will happen? भूमे गड़ी जाय इत बलि नित्यानंद। भूमे गड़ी जाय सोनार पर्वत जेन धुलाते लोटाय। और 30 पर भी यदि कोई हरि बोल बोल देता, If somebody used to say Hari Bol महामंत्र बोल देता, or Hare Krishna or the Mahamantra, then Nityanand Prabhu will become ecstatic. He used to become so ecstatic by giving holy names to others, and भूमि पे आलोटने लगते, he used भूमि to पे गिर जाते और नाचने लगते। circle on the ground सोनार पर्वत जिन धुलाते लोटाए। and सोने का पर्वत धूल और it मिट्टी में used to आलोट seem रहा है। that this golden mountain was ठाकुर कहते हैं circling on the ground. जार रतिना जन्मील लोचन बले से पापी एल आर गेलो। ऐसे अवतार में So, ऐसे in this यदि रति way, मति गति प्रेम उत्पन्न if we get love or mind or intellect towards Nityanand Prabhu,
then जन्म ही व्यर्थ हो their गया। life is इस प्रकार futile. श्री नित्यानंद प्रभु So हरिदास in ठाकुर this को way, लेकर जगह Nityanand और Prabhu used to पास पहुंचे। took Haridas Thakur to Jagai जगह and और Madai, मदाई को कहते हैं कि एक बार हरि बोल बोल दो। and he told them दोनों that के हाथ में please शराब की chant the बोतलें holy हैं। names. दोनों They शराब के both नशे में had चूर है और उस शराबी को liquor कहते हैं कि एक in बार हरि बोल their बोल दो। hands. हरिदास तो दूर चले गए, बोले यहाँ खड़े रहिए, Haridas बेइज्जती है। was एक बार हरि standing बोल बोल दो। far, ये लोग गाली दे but रहे थे, हरि बोल Nityanand बोल दो। Prabhu requested them to chant the holy names. और उस They वक्त were मदाई ने cursing क्या किया? and abusing him. And जो what did शराब Madai पीकर did? का था वो He जोर से took the नित्यानंद pot प्रभु of के liquor मस्तक पर मार दिया। and threw it on और Nityanand नित्यानंद Prabhu's प्रभु head, के उस चिन्मय देह से खून की धारा and बहने लगी। his blood started to ooze हरिदास from ठाकुर his सह नहीं forehead. पाए, And Haridas दौड़कर Thakur could not चैतन्य tolerate, महाप्रभु के पास and he गए। went प्रभु to प्रभु, Chaitanya Mahaprabhu and नित्यानंद told प्रभु को उस मदाई ने that उस Madai लाठी has से मारा और hit खून की धारा बह रही Nityanand है। Prabhu and the blood is oozing श्री from चैतन्य him, महाप्रभु बड़े his आक्रोश में body. आ गए। Chaitanya Mahaprabhu वे became बोले, very नित्यानंद angry, को किसी ने मारा? said श्री that चैतन्य somebody had महाप्रभु दौड़ कर आए और hit जगाए my मदाई के Nityanand, पास पहुंचे। and they जैसे came to Jagai and महाप्रभु Madai. भक्त के भाव में है, Although भक्त he बन के is in प्रकट the हुए हैं, as लेकिन he's आज manifested चैतन्य as a महाप्रभु devotee के of the Lord, भक्त नित्यानंद but प्रभु today के ऊपर when his devotee Nityanand Prabhu मदाई is ने attacked, डंडा मारा था, श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ में चक्र Chaitanya प्रकट हुआ। Mahaprabhu श्री चैतन्य महाप्रभु ने manifested सुदर्शन with चक्र का आवाहन his कर दिया। discus, बिजली की तरह गोल गोल घूमते घूमते सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। बस and कहने की देरी थी his discus और वह manifested, and it सुदर्शन चक्र waiting for the order, मदाई का गला काटे। and it could इसके have cut पहले their नित्यानंद throats. प्रभु But चैतन्य before महाप्रभु that, के चरणों Nityanand में गिरते Prabhu हैं। महाप्रभु, bowed आप down at the मेरे lotus feet अवतार of the Lord and said किसी that you दुष्ट have को मारने के taken लिए नहीं हुआ। incarnation not प्रभु to kill आपका अवतार people दुष्ट or the की demons, दुष्टता but को मारने के लिए to हुआ। remove their जगाई और मदाई bad जैसा पापी qualities. इस दुनिया में कोई नहीं है प्रभु। So, there is और nobody यदि far आप more किसी को trodden मारोगे than them. But तो if you आपका kill them, करुणा सागर नाम, then पतित the पावन name, नाम your गंगा name में of लग the जाएगा। ocean of mercy जिस will be नित्यानंद प्रभु को polluted जगाई मदाई ने forever or मारा, defamed उनको forever. बचाने के लिए वे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में So, प्रार्थना। इससे Nityanand Prabhu अधिक कृपालु is करुणावान praying for the भगवान persons who have कहीं attacked आपको him. नहीं मिलेगा। So, this is the इसलिए आप mercy of भगवान के सभी merciful अवतारों Lord. में करुणावान श्री कृष्ण है। So, the most कृष्ण से merciful भी is अधिक considered करुणावान as Krishna, श्री चैतन्य but महाप्रभु के even चरण more कमल merciful है। is Lord लेकिन इस Chaitanya भूल में Mahaprabhu, समझ as में आ he गया has the कि mellows चैतन्य of Srimati महाप्रभु से भी Radharani. अधिक But करुणावान even श्री more नित्यानंद merciful प्रभु is है। Lord Nityanand Prabhu. We क्योंकि can understand from this pastime of the Lord, चैतन्य महाप्रभु तो जगाई because मदाई को Chaitanya मारने के लिए Mahaprabhu तैयार हो was गए, about to kill लेकिन these नित्यानंद प्रभु ने उसे रोक Jagai and दिया। Madai, but Nityanand Prabhu saved them. तो इस प्रकार जहां So, पर in this ये manner, घटना घटी थी, where this वहां पर pastime ये happened, गंगा जी के एक घाट पर घटना घटी थी this happened at और the आज shore वो of घाट Ganga Ji, मायापुर में है, and that अंतर्द्वीप में है place is in और Antardweep उस in घाट का Mayapur, नाम है and its name जगाई is मदाई घाट। Jagai Madai Ghat or Wharf. और फिर आगे चलकर मदाई के मन में And बहुत further, ये दुख होता था। in फिर तो दोनों सुधर गए, दोनों later कलगीधारी they तिलकधारी भक्त बन all गए, क्योंकि became बहुत बदल गए। devotees of the Lord, फिर भी मदाई के मन में खटका था and कि मैंने Madai had नित्यानंद still प्रभु को मारा, मुझसे मुझसे बहुत बड़ा अपराध anxiety हो that गया, I have done a great मुझे offense इस अपराध by को hitting धोने के Nityanand लिए क्या Prabhu, करना and चाहिए। I should do something नित्यानंद to प्रभु absolve कहते my हैं sins. कि Nityanand यदि Prabhu said that मेरे प्रति या लोगों के प्रति तुमने अपराध किया है और if तुम्हें you have उससे मुक्त sinned होना है, against people or me तो and ये you want to घाट है, absolve that, इस then घाट at का this मार्जन wharf करो। you यहाँ भक्त should आते हैं, स्नान करते हैं, ये घाट में अनेकों प्रकार की गंदगी होती है, create यदि this. इस घाट को You साफ should करो clean और this यहाँ जितने wharf भी भक्त as आते devotees हैं come here उन and take a सारे dip of भक्तों the को water, प्रेम से प्रणाम करो, and तब you जाकर bow down ये at भक्त the भजन feet of those तुम्हारा devotees. अपराध दूर Then, होगा। by the mercy of the तो devotees, जिस घाट your के तट sins will पर be absolved. जगाई और मदाई का हृदय परिवर्तन हुआ, So, this is the place जिस where घाट को स्वयं जगाई और they मदाई had ने the change साफ of their किया, hearts वो and they जगाई cleaned मदाई this घाट place. अंतर्द्वीप में
and it is situated in Antardweep. तो इस जगाई मधाई घाट का दर्शन करने के पश्चात आइए अब हम So आगे बढ़ते हैं let's move जगाई further. मधाई घाट से So from 10 मील Jagai की ओर Madai चलेंगे Ghat, 10 if मीटर we की move दूरी पर towards the north, एक बहुत सुंदर at स्थान 10 है meters place बारकोना घाट away, अब ये तो आप there सब is a जानते हैं ना गंगा Bankona का Ghat. तट है It उसमें is the अनेकों घाट होते shore हैं of तो एक Gangaji, and there जगाई are so मधाई many घाट wharfs. So one और is दूसरा Jagai वाला जो Madai है Wharf, and the बारकोना other घाट is Barakona Ghat or Wharf. इस घाट का मूल रूप से निर्माण विश्वकर्मा ने किया था And in ऐसा this कहते was हैं made by मायापुर में Vishwakarma. नवद्वीप में In- सबसे सुंदर घाट And this ये is considered to बारकोना be घाट the हुआ most करता था beautiful ghat, क्योंकि देवताओं के शिल्पकार as श्री it was विश्वकर्मा ने created बनाया by था the ये सबसे सुंदर घाट architect of the क्योंकि यहाँ पर बहुत demigods. से उद्यान बहुत सुंदर पौधे चहचहाती चिड़िया और शांत वातावरण इस स्थान पर मिलता है महाप्रभु के समय पर इस बारकोना घाट And on the time of मंदिर हुआ करते थे Mahaprabhu, और there were उसी 5 मंदिर temples, में शिवलिंग हुआ करते थे and all these temples had इसी घाट पर shivling. श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा And प्राप्त on की the same place, और यहीं इसी घाट पर श्री he चैतन्य got महाप्रभु ने अपने छात्रों को his संस्कृत व्याकरण education, पढ़ाया था and he started teaching इसी Sanskrit बारकोना grammar घाट पर to चैतन्य his महाप्रभु disciples or अपने students. शिष्यों को संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहे थे और वो दिग्विजय केशव कश्मीरी And in this पूरे place, भारत में विजय प्राप्त Keshav करते हुए Kashmiri विद्वत्ता का came, अभिमान लेकर तर्क करते हुए शास्त्रार्थ करते हुए बंगाल में आया था और इसी बाराकोना घाट पर and on this श्री चैतन्य wharf or महाप्रभु pier, छात्रों को पढ़ा रहे थे और Chaitanya केशव Mahaprabhu कश्मीरी was के साथ teaching his students, शास्त्रार्थ हुआ था और and महाप्रभु ने केशव कश्मीरी they को had हरा दिया था a competition with Keshav और फिर Kashmiri. इस घाट पर आगे चलकर श्री जीव गोस्वामी और And नित्यानंद further, प्रभु का मिलन भी इसी Jiv घाट पर Goswami हुआ। met Nityanand Prabhu तो here ये on हुआ this place. बाराकोना घाट So this is the Barakona Ghat बाराकोना घाट से आगे or बढ़ेंगे pier. तो आगे So है if we move नगरिया further, गंगा then किनारे there लघु is घाट जैसे मैंने आपको कहा तो आगे है नगरिया घाट Nagariya ये Ghat नगरिया घाट or pier, बाराकोना घाट से 10 मीटर दूरी पर है and this तो is आप 10 समझ meters रहे हैं away. कि एक घाट फिर दूसरा घाट फिर तीसरा घाट जगाई मदाई घाट बाराकोना घाट फिर नगरिया घाट ये नगरिया घाट जो है So this Nagariya pier or ghat, यहाँ इस घाट पर गंगादास पंडित की स्कूल है okay, this श्री चैतन्य was the school of महाप्रभु इस Gangadas घाट के Pandit. तट पर So Chit- गंगादास पंडित की स्कूल on में this 2 साल तक पढ़े shore, Chaitanya Mahaprabhu और studied here for 2 गांव में years. तो पढ़ना लिखना क्या होता है पढ़ते थे और स्कूल से निकलकर उस गंगा में स्नान करते थे And he used to और go to और take the जितने dip in शरारती Gangaji हुआ after करते थे school. निमाई And he was छोटे so दिनों में naughty as Nimai तो when स्कूल he से was a निकलकर child. वहां स्नान करते थे और He स्नान में used to करते take the हुए holy जितने dip लोग here, आते थे उन पर पानी and उछालना he और used कीचड़ to डालना put अब water तो लोगों and के दिलों mud में इतना on दम हो गया कि further जहां ये लोग people. स्नान करते वहां हम And नहीं जा सकते people were so एक much बार किसी disturbed आश्रम that they वाले ने said that we समझा will दिया not go where तो he is दौड़कर there. जगन्नाथ मिश्र के पास गया महाप्रभु So के पिताजी one और person तुम्हारा बच्चा complained बहुत to दिमाग his में दम करके father पूरा घर Jagannath बिगाड़ Mishra. दिया He said that और निमाई your को पता लग son गई कि is मेरी troubling all शिकायत of us. नहीं है And तो वे he जल्दी realized जल्दी that वहां से Nimai बाहर निकले realized कपड़े that बदले और his अपने बाबा complaint को has सुखाया got to his father. और अपने So घर जाकर और अपना हाथ he जो था वो पेंसिल से वो इंक से he, थोड़ा सा बिगाड़ दिए और घर जाकर शांति से बैठ गए बेटा बेटा he तुम कहाँ से बोल रहे sat हो मैं तो पढ़ने आया था calmly. सीधा स्कूल से घर He पर said आया that हूँ I'm coming back straight जगन्नाथ from the मिश्र school. देखते हैं तो And न कोई Jagannath स्नान Mishra says किया हो that न बाल गीले न कुछ his स्नान किया not हुआ or his hair dry, यह there are no सोचकर वो signs of आदमी his चुप taking रहा a dip. होगा He thought that the उसने person अपने might बच्चे have को been कुछ lying. डांटा न कुछ कहा He didn't ये scolded क्या his son. शांति थी नागरिया घाट ये So वही this घाट है Nagariya Ghat जहाँ is the पर place where शची देवी ने लक्ष्मी प्रिया को Shachi सर्वप्रथम Devi देखा था saw ये वही Lakshmi घाट है Priya जहाँ here पर अच्छा पति for the प्राप्त first time. करने के And लिए this is the same place मायापुर where नवद्वीप की छोटी in छोटी Mayapur, गोपिका Navadvip, the गंगा के तट पर young इस घाट girls पर देवी देवताओं की पूजा करती थी venerate तो demigods to जब get a जब ये great छोटी छोटी husband. कन्याएं व्रत रहती है ना अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए So when they तो used to खास fast करके निमाई श्री to चैतन्य get
a good husband, especially Nimai, would mess around. He said that you don't need to worship the demigods. आमा पूज आमी दिब बर बोले तुम देवताओं की पूजा मत करो तुम मेरी He said पूजा that you करो should मैं not वरदान दूंगा तुम worship the demigods. बोले गंगा यमुना दासी मोर महेश किंकर ये गंगा दुर्गा यमुना मेरी दासी है और He महेश said that जी all these demigods are my servants. पीछे पीछे घूमता है तुम मुझे ये जो भी So, पूजा सामग्री है मुझे दे दो मेरी so you should offer all these to me and worship me. And if you worship me, then you will get a great husband and you will get 10 sons from them. So some girls used to run away from there and they used to get angry. And Chaitanya Mahaprabhu used to say that you don't worship me, I will curse you that you will get a old husband and you will have 4 co-wives. And they used to come back and offer it to Chaitanya Mahaprabhu. So all these were leelas or pastimes were happening on this pier or wharf. So this is one place that is Ganga Nagar, which is attached to Mother Ganga here. In this place, she stayed here to get Chaitanya Mahaprabhu. So let me summarize this pastime. From Brahmaji, Manu Maharaj manifested, and there was a lineage that is Ikshvaku from them. अनेना के पुत्र हुए पृथ पृथ के विश्वरंदी विश्वरंदी के चंद्र चंद्र के यूनाश्व यूनाश्व के शाबत्स शाबत्स के बृहदश्व बृहदश्व के कुलाश्व कुलाश्व के दृढ़ाश्व दृढ़ाश्व के हरियश्व हरियश्व के निकुम निकुम के कुशाश्व कुशाश्व के पुत्र हुए सेनजीत सेनजीत के पुत्र हुए यूनाश्व और यूनाश्व के पुत्र हुए मानधाता जिनकी 50 कन्या के साथ शौबरी जी का विवाह आदि हुआ। मानधाता in this lineage, Mandata had 50 daughters who were married to Shobri Muni, and then he had sons, and in this lineage was Harishchandra, never told a lie. So we should all remember this because Ram Navami is approaching. I'm revising all this. So Bahuk's son was Sagar and he had 60,000 sons. And we all know that they sinned against Kapil Dev and they were died. And to absolve their sins, they were forming austerity. So Sagar had another son, Asmanjas, tried to absolve their sins and liberate them, but they couldn't achieve it. So eventually, Dilip's son, Bhagirath, performed austerity and made Gangaji happy and satisfied. And she came from Brahmalok to Kailash on the head of Lord Shiva, and from there Gangotri to Haridwar, and covering the whole India or Bharat, she reached finally to Navdip Mayapur Dham. So the situation is that Gangaji is following Bhagirathji, and he knows where he has to take them. He wants to take them to Ganga Sagar. So Gangaji is following him.
So they were covering Navdvip, and he saw that Bhagiraji realized that the sound has stopped, and he said that Gangaji is not moving further from here. Gangaji was. She, Bhagiraji said that you still have to go 100 kilometers more. So we have to walk 100 kilometers where my ancestors are there. Gangaji said that I don't want to go from here. And Bhagiraji said, why? He said, this is the Magh has ended and Falgun is approached. And on the Falgun Purnima, Chaitanya Mahaprabhu will manifest, and it's his birthday is very near. So it's my desire that we should celebrate his birthday here, and then only I will move further. So Bhagiraji said that, yeah, let's wait. So Gangaji stayed there, and Bhagiraji also stayed there. Bhagiraji is a king. What he did? He established a town here, and it was named Ganga Nagar. And Ganga Ma fasted on Chaitanya Mahaprabhu's birthday, as Chaitanya Mahaprabhu will manifest in future, but she started the veneration long back on this day. And then she went ahead to Ganga Sagar. That is why this place is called Ganga Nagar. So Govind TV has reached to Bharadwaj Tila. This is a beautiful place. It is mentioned in Chaitanya Charitamrut, etc. scriptures. You can see the verse here. Tato gatva bharadvaja snanam sankirtayan harim tato mayapuram vasam pravishye swayam hari. Swayam hari, swayam Bhagwan Hari mane swayam Hari means Lord himself, that is Chaitanya Mahaprabhu, went first to Bharadwaj Tila, and there he did the Sankirtana, and then he went to Mayapur. Swayamhiri means Lord himself. Bharadvaj Muni basahi prayaga. मैं गा रहा हूं, आप लोग दर्शन कीजिए. भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा. भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा. भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा. तिनहि राम पदयति अनुरागा. तिनहि राम पदयति अनुरागा. तापस समदम दया निदाना. तापस समदम दया निदाना. तापस सम दम दया निदाना. परमारथ पथ परम सुजाना. परमारथ पथ परम सुजाना. भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा. भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा.
ये वही भरद्वाज ऋषि हैं So this is the same Bharadwaj Rishi from where Ramayana opens. There cannot be any Gita without Arjuna. Similarly, Bhagavatam cannot be without Parikshit, and without Bharadwaj there could not be Ramayana. He stays or resides in Prayag. And when there is the Kumbh Mela and so many saints come to Prayag and they never miss such opportunity to miss to visit him. And one day he said that, oh great sages, who have controlled his mind and body, such is Bharadwaj Rishi. And when he realized that Chaitanya Mahaprabhu will manifest in Navdeep Mayapur, so he came from Prayag and came to Navdeep Mayapur, and he liked one place, and this was the temple that was constructed later, and Bharadwaj Muni sat here on this Tila, who is a devotee of the Lord, who started chanting Gaur bhajan. बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल का कीर्तन करने लगे, भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु को याद करने लगे। और इसी he started remembering Chaitanya Mahaprabhu, and on this place, when he was remembering Chaitanya Mahaprabhu manifested here, and he was satisfied, and he told him to ask for a benediction. And what did Bharadwaj Rishi replied? He said that you give me a boon that I can see your pastimes in Navdeep with my own eyes. And Chaitanya Mahaprabhu agreed, and he said that your desire will be fulfilled. And on this place, Bharadwaj Rishi saw all the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. So this is Bharadwaj Tila. So now let's proceed further to a beautiful place that is the home of Murari Gupta. So he was one of the associates of the Lord Chaitanya Mahaprabhu, and there was one associate of the Lord who had full faith in Lord Ram, and it was his faith, his firm faith was on Lord Sri Ram. So if we move towards the north, there is a road. If you walk half a kilometer, then there is this small temple, and this is the home of Murari Gupta. So this is covered by drone through Govind TV. And Govind TV went there personally and shoot it here. So here is this beautiful temple. Sorry. Where Bhaktisiddhanta Saraswati established the deities of Ram, Lakshman, Sita ji and Hanuman ji. So
Chaitanya Mahap, oh, Bhaktisiddhanta Saraswati, when he was digging the place here, they found Lakshmi Narayan four-armed form and he established it in his Chaitanya Mutt. So Murari Gupta was asked that why don't you? So let's hear from the sages, a saint from the residents of this place. जय श्री राम सीता हनुमान जीव की जय, मुरारी गुप्त ठाकुर की जय। तो ये मुरारी गुप्त ठाकुर जो है हनुमान जी का अवतार है। मुरारी गुप्त ठाकुर, Murari Gupta ji is the incarnation of Lord Hanuman. And here we have Gurupad Prabhu here, and he will tell the glory of this place in short. লিখা আছে চৈতন্য ভাগবতে নদিয়ার নবদ্বীপে শ্রীধাম So, মায়াপুরে অন্তর্দ্বীপে মুরারি গুপ্তের সিপাটে আপনারা অবস্থান করছেন। মুরারি গুপ্ত হচ্ছেন হনুমানজির অবতার। পুরুষ ও মর্যাদা রামচন্দ্রের দাসরূপে সেবা করেছিলেন হনুমানজি অবতারে রামলীলাতে। গৌরনীলাতে মহাপ্রভুর পার্ষদ ঠাকুর মুরারি গুপ্ত মানুষ হয়েছেন। ইনার আদি জন্মস্থান বাংলাদেশ সিলেট ডিস্ট্রিক্টে। চৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করার পূর্বে এই স্থানে মুরারি গুপ্ত ভজন করতেন। তো একদিন চৈতন্য মহাপ্রভু তার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে করে নিয়ে এই স্থানে আসলেন। দেখলেন মুরারি গুপ্ত কুটিরে বসে সীতারাম 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 জপ করছেন। তো গৌরহরি বললেন, মুরারি এ কলিযুগ, কলিযুগে যুগধর্ম, হরিনাম সংকীর্তন করুন। কারণ কলিযুগের একমাত্র হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছে যুগধর্ম। রাম রাম ছেড়ে হরিনাম করুন। যখন চৈতন্য মহাপ্রভু একথা বলেছেন, মুরারি গুপ্ত কর্ণপাত করলেন না। তো চৈতন্য মহাপ্রভু বুঝতে পারলেন মুরারি গুপ্ত হনুমানের অবতার, অতএব তিনি রাম ভিন্ন কিছুই চেনেন না। তখন মুরারি গুপ্তকে বললেন গৌরহরি যে মুরারি তুমি অভ্যাস করে আমরা পুনরায় আবার আসবো। যখন এই কথা বললেন মুরারি গুপ্ত তখন বললেন, প্রভু আমি রামই আমার সর্বস্ব। তো যখন চলে গেলেন তিনি রাত্রে চিন্তা করছেন যে গৌরহরি তো আমায় কৃষ্ণ নাম করতে বললেন, আমি রামকে ছেড়ে কী করে কৃষ্ণ ভজন করব। আমি যতবার কৃষ্ণ নাম বলবার চেষ্টা করছি ততবার আমার মুখে রাম রাম উচ্চারণ হচ্ছে। তো পুনরায় যখন আবার আসলেন দেখছেন গৌরহরি কুটিরে বসে অজর নয়নে কাঞ্চন আর সীতারাম সীতারাম জপ করছেন। তখন গৌরহরি বললেন, মুরারি তুমি কৃষ্ণ নাম করবে না? বলছে, প্রভু আমার মুখে কৃষ্ণ নাম আসছে না, যতবার চেষ্টা করছি কৃষ্ণ নাম বলবার জন্য তখনই আমার মুখে রাম নাম উচ্চারণ হয়ে যাচ্ছে। গৌরহরি বললেন যে মুরারি গুপ্তের ইষ্ট দেবতা রামচন্দ্র, অতএব উনি হনুমানের অবতার, রাম ভিন্ন তিনি কাউকেই চেনেন না। অতএব গৌরহরি যে স্থানে আসেন স্বয়ং ভগবান জানেন, কিন্তু প্রণাম করছেন না। ভক্ত যদি ভগবানকে প্রণাম না করে তাহলে তার অপরাধ হয়ে যায়। তো চৈতন্য মহাপ্রভু দেখলেন মুরারি গুপ্তের অপরাধ খণ্ডন করবার জন্য একদিকে তার নীলা একদিকে তার জীব শিক্ষা দুটোই কার্য করছেন একত্রে। তো মুরারি গুপ্ত কী করলেন? মুরারি গুপ্ত বলছেন, প্রভু আমার তো রাম নাম ছাড়া মুখে আসছে না, তাহলে আমি কী করব? বলছে, না তুমি আমাকে অন্তত বসতে দাও, জায়গা দাও, প্রসাদ দাও, কিছুই দিচ্ছে না। বলছে রামই আমার সর্বস্ব। তো হনুমানজির একাগ্রতা হচ্ছেন তিনি রামচন্দ্রের চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন। তো মুরারি গুপ্ত সেই হনুমানজি, অতএব রামকে প্রণাম করছেন না। কেন করছেন না? গৌরহরিকে প্রণাম করছেন না, যে রামই আমার সর্বস্ব। তো গৌরহরি বুঝতে পারলেন উনি রাম ভিন্ন কাউকে প্রণাম করবে না, অতএব উনি সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবাদ করতে বললেন যে প্রভু একবারই সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবাদ করো। যেই সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবাদ করলেন উঠে দেখেন সেখানে গৌরহরি নেই, তার ইষ্ট দেবতা রামচন্দ্র স্বয়ং প্রকাশ হলেন। রাম লক্ষ্মণ সীতা, এটা স্বয়ং প্রকাশ বিগ্রহ বলা হয়। তো যখন প্রকাশ হলেন তখন গৌরহরি বললেন, মুরারি আজ থেকে তুমি রামেরই সেবা করবে আর কলিযুগে যুগধর্ম হরিনাম করবে। আজও অবধি এই স্থানে রামচন্দ্রের সেবা হচ্ছে, আর কলিযুগে মহামন্ত্র হরিনাম সংকীর্তন মুরারি গুপ্ত গৌরহরি থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, অতএব তিনি গৌর কৃষ্ণ নাম করেছিলেন। আর এখানে অনেক মাহাত্ম্য আছে। একদিন গৌরহরি বললেন, মুরারি তোমার গৃহে তুমি আসলাম, একটু প্রসাদ দাও। প্রসাদ কী দেবেন? উনি সবসময় রাম নামে ব্যস্ত থাকেন। তখন এখানে বললেন, প্রভু কী প্রসাদ পেতে ভালোবাসো? তখন গৌরহরি বললেন যে তুমি কী আর দেবে, ঘিতমাখা চাউল, অর্থাৎ খিচুড়ি অন্ন দেবে। তো গৌরহরি মুরারির কাছে খিচুড়ি অন্ন চাইলেন, উনি দেবেন বলে সারাত্রি চিন্তা করতেন, প্রভু তো আমার কাছে ঘিতমাখা চাউল চাইলেন, আমি কী দেবো? এই চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন। তো ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে আবেষ্টে
গৌরহরিকে খাও খাও বলে ছড়িয়ে দিলেন ঘিতমাখা চাউল। স্বপ্নে যেহেতু খাওয়াইছেন কিন্তু জল দেয় নাই, জল না দেওয়ার ফলে কী হলো, অজীর্ণ হলো। ফের সকালে আসলেন এই স্থানে, বলছে মুরারি হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी को भूरी भूरी धन्यवाद। प्रभु जी ने बहुत सुंदर इस स्थान का महत्व, मुरारी गुप्त ठाकुर का जो पास टाइम्स है वो हमको बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किए। तो हम उनका संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हैं हिंदी में थोड़ा। प्रभु जी ने बताया कि मुरारी Prabhuji told that Murari Gupta Thakur was an incarnation of Lord Hanuman, and one time when Murari Gupta was chanting Ram Nam here, but in the age of Kali Yuga, although he was born in Kali Yuga, he used to chant Ram Nam. And Chaitanya Mahaprabhu said that this is the age of current hypocrisy, Kali Yuga. So the mantra for this yuga is Mahamantra. Murari Gupta didn't answer. And Chaitanya Mahaprabhu said again that you try one more. You should try more and I will come tomorrow. And he said that I will try. He tried, but as he said Krishna, he only said Ram Nam. He tried hard, but it didn't happen. The next day when Chaitanya Mahaprabhu came, then Murari Gupta was crying and chanting Ram Nam. Chaitanya Mahaprabhu said that why you're crying? And he said that I tried hard, but I cannot utter anything beyond Ram Nam. As I want to say Ram Nam is only pronounced by me. And Chaitanya Mahaprabhu realized that he is the incarnation of Lord Hanuman. And he has devoted himself completely to the lotus feet of Lord Ram. So Mahaprabhu thought that I am the Lord. He is not even bowing down at my feet, and this is an offense. He said that you should bow down at my feet. And as soon as he bowed down at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, and he manifested as Ram, Lakshman and Sita Ji here in this place. And then Murari Gupta bowed down at his lotus feet. And they said that from today, this is Kali Yuga, so you should chant the holy names of Lord Shri Krishna. And then another pastime that Prabhuji shared with us, one time he was meditating or doing Sankirtana, and Chaitanya Mahaprabhu said that you should offer me bhoga. And he thought that what should I offer to the Lord? And he was contemplating and he went to sleep. And in his sleep, he made khichdi or a porridge, but he forgot to give water. When he awoke, and he said that Chaitanya Mahaprabhu said that my stomach is upset. He said that you gave me so much khichdi as bhoga, but you didn't offer me water. Now give me some medicine. Murari Gupta thought that what should I offer you as medicine? He said that give me the water of your home. That is the biggest medicine, and this water is so much medicinal value and is very valuable. If we drink the water from here, all the distress and disease will be removed. So there are many more glories, but we heard in short. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. श्री मुरारी गुप्त की, श्री राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी महाराज की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। बैठो बैठो, अभी यात्रा बाकी है। कुछ लोग खड़े हो गए, अभी बाकी है। सो बहुत सुंदर लीला ब्रजवासियों के मुख से सुनना। So
if we listen from the residents of the holy places, that is very sweet. And we couldn't understand, many people could not understand, but the language is very sweet that we understand. तो अब हम यहाँ से आगे बढ़े So if we proceed from here further, पृथु कुंड there is a Prithu Kunda. If you see in the on the screen, it is mentioned in Shrimad Bhagavatam about Prithu Maharaj. And this is the kun made by Prithu Maharaj himself. So the pastime, as you know, that Dhruv Maharaj had son Vatsal, and his son was Pushpan, and his son was Pushkarna, Yushta, and then Sarvatej, Chakshu, then Manu, and Utlabhu, then Ang, and Ang's son Vain, and Vain's son was Maharaj Prithu, who was the incarnation of the Lord himself. So to balance the he sent the laborers that dig the earth and make it flat so that people can live here peacefully. When his followers or laborers came to Navdvip and they started digging the place, then a great effulgence emerged, which was transcendental, which nobody has seen or thought. And Prithu Maharaj got this information and he came here and he realized that this is the pastime from Satyuga and Mahaprabhu is to manifest in Kali Yuga. But Prithu Maharaj realized that this is the Navdvip Kshetra and here Lord Chaitanya Mahaprabhu will manifest. So he stopped this digging here, and further in future Lakshman Sen and Balal Sen made beautiful pond here, and it is still in Antardvip Navdvip where we can visit and see. And if we go further, there is a beautiful place that is Sridhar Angan. So there is no much images of this place, but there is a small temple here. So Mahaprabhu had a beautiful disciple Kolavecha who used to sell the banana leaves, and although he was very poor, yet Mahaprabhu used to take rest in his home, and he used to stay at Sridhar Kolavecha's home, and sometimes he used to tease him with love. So he used to sell bananas and banana leaves, and Mahaprabhu asked, for how much you are selling this? And Mahaprabhu said that you are selling it for huge price. He said that I am asking the least price, but Mahaprabhu said that no, you are asking more money. And Mahaprabhu said that how you are earning your livelihood by just selling the bananas and banana leaves. He said that when there is a distress, I just clap my hands and say Hari Hari, and all the distress go away. And when I get happiness, then also I clap my hand, and so I don't get any pride, and thus I am living peacefully. This is the place, Srivas Angan. There is a beautiful place that is Shashti Tirtha. Mahaprabhu was about to manifest, and before that,
demigods came here and they saw that Chaitanya Mahaprabhu will perform Sankirtan here with all his devotees and disciples. So they will feel thirsty while performing Sankirtana. So we should make arrangements for their thirst. So the demigods called Vishwakarma and established 60 wells here. And demigods themselves did it with the help of Vishwakarma. And the last well was at the Chandkazi's home. We will see near Chandkazi's Samadhi. That is why it is called Shashti Tirth. So there are quite a few places, but the important last place is in Navadvip Mayapur, opposite to the Iskcon Mayapur temple. There is Ishodhan, which is the home of Nandan Acharya. So this is called Ishodhan, and for us it is an important place. This is the place where Chaitanya Mahaprabhu and Nityanand Prabhu met each other. Chaitanya Mahaprabhu he used to live with his associates, but he had a desire that there was still something missing, and that was the absence of Nityanand Prabhu. He was feeling his absence, and Nityanand Prabhu, after roaming Braj, and eventually he came to Mayapur. And Nityanand Prabhu thought that I am the elder brother, why should I go to the younger brother? He should come to me. So Nityanand Prabhu, he is the paternal uncle of Mahaprabhu. And he started staying here. And Chaitanya Mahaprabhu daily used to tell his devotees that somebody has entered our village, please bring him to us. But they couldn't find him, and they'll come empty hand. And again, Chaitanya Mahaprabhu used to send them again. For 15 days, they were told the same. Then, when they couldn't do it, then Chaitanya Mahaprabhu came with his devotees on the 15th day, and they came to this place. And seeing that Chaitanya Mahaprabhu is here, Nityanand Prabhu hid here, that I will not come out. And he said, where is that thief? Where have you hid him? Nandacharya said, who? I don't know anyone. He said that you have hidden him somewhere. So there was a beautiful exchange between them. वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति. तब नित्यानंद प्रभु को ब्रज लीला याद आई. Nityanand Prabhu remembered Braj Leela, and he came out from his hiding place. And after seeing his own brother Anant Shesh, Ram, Lakshman, Balram and Krishna meeting after so many years, when they met each other, they embraced each other, and their eyes were filled with tears, and all the devotees were seeing this beautiful moment. And this is the place where Chaitanya Mahaprabhu met Nityanand Prabhu. Today there is a beautiful deity here that we can see.
So this is the beautiful Ishodhan. This is the entrance and this is the Acharya Bhavan or the home of Acharya. This is the temple's veranda and these are the deities here. So let me introduce these deities to you. There are 3 altars here. In the center is the beautiful Gaur Nitai and Narsingh Bhagwan, which are made with neem tree. And Shri Gaur Nitai in the center. On the left, Giri Govardhan and Gaurang Mahaprabhu with both his hands raised. Govardhan Maharaj. So, this is Govardhan Maharaj, as you can see, and Chaitanya Mahaprabhu, big and small, the 2 deities. So there is a pastime behind them as well. And on the right is Radha Vinodji are established here. They are beautiful and attractive. They steal our heart. So this is today's last darshan. We took advantage of this. You all listen very patient and happiness. You heard these pastimes and you participated in this yatra. So you have walked a lot. You might have tired. So let's rest at Antardweep today. One darshan is still pending. Why should we keep it? So Govind Devi has sent it, so let's see that. So this is the same, but the picture is more clearer here. Bhagwan Narsi, Bhagwan. शशि गौर निताई और राधा विनोद जी. So धन्यवाद. So thank you so much that you listened with so much mellow and love and participated in this Katha and Yatra. So for 2 days we traveled for Antardweep. So tomorrow we will travel to Simantadweep. In 9 days we will try to finish these 9 islands or dweepas with the glories and pastime. Thank you so much. I especially want to thank the organizers of the 2nd day, by whose help we have organized this Katha, the Bharadwaj family, Sri Ramvati Mata, Rajesh Prabhu, Suman Mata, Narayan Hari ji, Priya, Navya, Sanjay ji, Saroj ji, Naresh ji. We thank you all for organizing this, and along with them from Kusumika Mataji from Netherlands, Holland. So it's midnight in Holland, but still she is in the yatra with us. And Chipu Chandra daughters, I thank you all. And 7 more days we will have this yatra. And in between we will celebrate Gaur Purnima. And we will do Abhishekam for Chaitanya Mahaprabhu. And I request you all to participate in that. And Amit Narayan Prabhu will organize on our behalf, as he mentioned. So let's take advantage of pure devotional service towards the Lord. So let's conclude the session, the 2nd day of this yatra with Jai Jaikar. श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की.